A very good morning. A very good morning to one and all present today. Myself, Dr. S.K. Singhal, Treasurer, IAPT RC1 Delhi Arena. Welcome to all the participants, our guests in this first day of the short-term training program. And we have Dr. P.K. Ahluwalia, sir, National President of IAPT, and we have Dr. P.P. Srivastava, sir. We are waiting for him to join. P.P. Srivastava, sir, our former President of IAPT. Dr. O.P. Sharma, Dr. Seema was the President of the RC1 Delhi Arena, and all executive members. Welcome to all of them and all participants. All are requested to mute your. Okay. Today on 18 June, IAPT RC1 is organizing a short-term training workshop on innovative hand experiments on Arduino and its application. This is the part 3 of investigatory physics projects using Arduino. So I again welcome to all of present today. Now I request Dr. Manoj Kaushik sir to give the brief introduction of IT. Dr. Manoj Kaushik is the EC member of IAPT RC1 Delhi Arena. Manoj sir. Good morning all. Sabhi ko namaskar. I think I'm clearly audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thanks a lot, first of all, for giving me this opportunity. I am on behalf of RC1 here want to give a brief introduction of our organization, Indian Association of Physics Teachers. This organization originally established in 1984 by Dr. D.P. Khandelwal sir with some active support from some physics teachers. The main aim of our organization is to upgrade the quality of physics as well as physics teachers at all levels. This organization now grown up into a major organization with about 6,500 live members, those who come from around 1,500 organizations. And our members include all school, college, university teachers and research workers, science administrators, and science-savvy enthusiasts. For the operations in this organization, we have for grassroots working, we have divided at national level into 20 regions, each with a regional council. We call it RC, and ours is one of them, the Delhi and Haryana. Major activities of IAPT include, number one, 2 national level examination we conduct. National Student Examination in Physics, NSEP, and NGP, National Graduate Physics Examination. These 2 examinations are very prestigious examinations which are linked to International Physics Olympiad also. The top 1% at national level, they are able to join this in Olympiad. IAPT also organizes various workshops for teachers and students. So a number of other activities are also there for the benefit of teachers. Yeah. So this was how we try to connect each and every teachers with our organization. I again welcome all participants in this workshop, and a number of other workshops are also in lineup with same objectives, so that all enthusiastic teachers and all persons who are interested in physics and areas of physics can join our organization. Thanks a lot. Thank you very much, and once again welcome all participants. Thank you, sir. Thank you, Manoj sir. Now I request
Dr. Seema was our president IAPT RC1 to introduce our national president P.K. Alwar sir, but unfortunately he has not. Just trying, ma'am. I'm trying to join him. Just I think we should wait for one. Meanwhile, I think Rajiv Tyagi sir can introduce Shazwani sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Rajiv Tyagi sir is the EC member of IAPT RC1. I request him. Good morning, everyone. Shazwani sir doesn't need any introduction. The amount of work that he has done and the zeal and the youthful energy that he exhibits, it's known to everyone, but still it's my privilege to formally introduce him to you. Shazwani sir has an experience of 47 years of teaching. Now, some of us might not even be 47 years old. He has been teaching for 47 years. He took voluntary retirement from the post of principal from SG College, Panipat. And before that, he was a lecturer there, HOD there. And currently, he is involved in R&D, development of R&D centers at schools and colleges. He has been the Dean Academics in IEC group of institutions, Greater Noida. He has been the HOD there, Chief Coordinator there. So, the final year projects that students make in their engineering, in their B Pharma, B Tech courses, all such courses, he has been the guiding force. And all this experience, all this knowledge is so much evident when he conducts workshops, when he, on all his works. Apart from physics and the workshops that he's doing, he has developed softwares, and he has a first-hand knowledge of all those programming languages, and he has developed softwares for physics teaching. He has developed softwares for other associated fields. So with that vast experience and vast knowledge that Shazwani sir has, it's an actual privilege to attend his sessions. The ones that I have attended, I have truly been benefited. So it's an honor, sir, Shazwani sir, to spend time with you, to get your blessings, to get your guidance. I welcome you, sir. Thank you very much. Thank you, Rajiv sir. Thank you, sir. Let's wait for 1 minute. I think Professor P.K. Ahluwalia sir will join in a minute. So I'll just introduce him to the participants. Professor P.K. Ahluwalia is a president of IIPT, and he was a professor at Himachal Pradesh University. He has many national and international publications to his credit. His research interests are condensed matter physics and physics education research. He has guided almost 18 PhD students, and he has been awarded Commonwealth Academic Fellowship at University of Edinburgh, UK in 1997 to 1998. He has also been awarded Environmental Leadership Award in 2017 in the individual capacity by Department of Shimla. Currently, he is also the coordinator of UGC Nodal Center for Computer Applications in Physics, Mathematics, Commerce, and IQ AC, Bhara University. He created facility of 128 crores for electronic structure calculations using DFT3, upgraded research and teaching facilities under FIST and UGC SAP on computational physics and related areas. He has also taken many initiatives for improvement of research facilities in the campus. We welcome you, sir, and kindly enrich us with your inspirational words. Since you are about to join, so meanwhile, we can have, we'll move on to single sir, and sir, kindly proceed. So I think we should wait for one more minute for sure. the Ahluwalia sir to join, because we have sent a password to him. I think he's finding some difficulty in joining. So that, because after that we just start the session by Shazwani sir. I'll just call him and confirm, right? Yeah. In the meantime,
if we utilize this time to discuss few more detailed activities, if Sima Madam allows me to continue. Yes, sir. Sure. Please go ahead. Thank you. So if we go in some details, I would like to introduce a few more activities of IAPT to all our new participants, although our members already are known to it. IAPT also organizes Anveshika workshops, and these workshops are at school levels. In addition to this, several workshops on activity-based learning and activity-based teaching learning in different schools and colleges are also being organized by IAPT. And IAPT actually publishes few periodicals also. One is IAPT Bulletin, which is distributed free of cost to all its members. And other is Physics Education. These two are regular important periodicals from IAPT. In addition to this, our student journal is also published by IAPT. This is the Prayas. The name is Prayas. So these are three main journals and periodicals which are available to all its members free of cost. Another activity from IAPT is that we organize annual convention which is open to all members of IAPT. These are also free of cost, and they can present their experiences in the form of papers and posters. In addition to this, sometimes National Student Symposia on Physics are also organized to provide forum for students so that they can engage in innovative and investigatory projects. These are a few of IAPT activities at different level. And in addition to this, RC, the Regional Council, also organizes some additional workshops and activities on its own. These are some of these are. One is organizing a regional competition on innovations in computer for physics. We call it RCICP. We also organize a regional competition on innovative experience. We call it RCIEP. So these are the few more details I think I could utilize the time gap here. So thank you very much. Thanks. Yes, yeah, madam, you can continue. Yes, sir. Actually, Ahluwalia sir is going to join. He said you can continue with the program. We'll talk about it later on at the session, right? Shazwani sir. So we invite Shazwani sir. HK Shazwani sir. Sir, you are muted. Kindly unmute. नमस्कार, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सीमावत जी प्रेसिडेंट हैं, सिंगल साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर राजीव त्यागी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन इतना खूबसूरत दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। मनोज जी ने आईएपीटी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी। पीके अहलूवालिया जी शायद इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, पर वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे, मेरी ऐसी आशा है। और मेरे गुरु जी प्रोफेसर खरे साहब भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट जो वीपी शर्मा जी और वीपी श्रीवास्तव जी और ओपी शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया है टू डू समथिंग, और कुछ करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने आईएपीटी के फोरम पर भी दिए हैं, और मैंने डेवलप किया है अपना इंटरेस्ट इन ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी आर्डिनो।
मैंने सुना है कि ये आर्डिनो जो टेक्नोलॉजी है वो शायद क्लास 7 में इंट्रोड्यूस होने वाली है, कंपल्सरी इंट्रोड्यूस होने वाली है एज ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आर्डिनो आर्डिनो इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेशन प्रोग्राम है और ये स्किल प्रोवाइड करता है बच्चों को। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इससे, ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं। अभी मेरी एक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी, उन्होंने आर्डिनो पर बहुत बढ़िया डॉक्टर डॉक्टर का प्रोग्राम बनाया है। मैं डेफिनेटली उसको कल के सेशन में डिस्कस करूंगा। आज के सेशन में मैं प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, और आज के सेशन में हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। मैं आपको सारे कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्डिनो। और कल के सेशन में आप जो प्रोग्राम की एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट अपने घर में जाकर करेंगे, उसमें आपको जो डिफिकल्टीज आएंगी या आप उसमें के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कल। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, और स्क्रीन को शेयर करने के बाद मैं अपने Sir, sorry to interrupt you, but because some people have asked me that they were not able to install the Tinkercad, so you can actually please tell them as well. they will understand it today. In the today's session, I will tell them and Okay. how to install it, and if they have the laptop with them, they will be able to install along with me. Is it okay for them? Thank you, sir. Yes. So it is not necessary that they should have installed. I just told them that they should install it, and if they are unable to install, they will be able to install today. आज वो डेफिनेटली उसको इंस्टॉल कर पाएंगे जब मैं प्रोग्राम को बताऊंगा। तो मैं अपना स्क्रीन मेरी आपको दिखाई दे रही है? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Deeply visible. हाँ, ओके। सो आई एम देखिए, मैंने टोटल प्रोग्राम जो हमने करना है, जो कि 5 दिनों के अंदर मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है, और आज हम पहले दिन को डिस्कस करेंगे। हर डे के प्रोग्राम को एक्चुअली हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम पहले दिन उसको एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और उसको दिखाएंगे, और दूसरे दिन हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उनकी जो भी डिफिकल्टी होगी या जो भी आइडियाज होंगे उन आइडियाज को हम एसिमुलेट करके एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। इन टुडेज डे 1 I shall be telling what is Arduino and what it can do. We will be discussing the components which are used in the Arduino. We will download and install the Arduino. We will download and install the Tinkercad. We will understand the red light program normally explained by each and everyone. We will discuss the all possible errors tomorrow only in the question answer session, and then making the connections and running the program. We will show the live demo of 1 or 2 programs depending upon the time available with us, and we'll make
will be making simulating the red light this circuit in the Tinkercad. I will let everyone understand how to use the Tinkercad even without having the components are required for understanding the Arduino. So to begin with, one should understand what are the different components. Arduino, in fact, is a open source hardware as well as software device. Hardware device is our board, which is called as a Arduino board. This is the Arduino board. And second one is the breadboard. Then USB cable, each and everything I will be showing you one after the other. Then we need the laptop or the computer. Various sensors I'll be showing you. Not all the sensors because the list of the sensors is extremely large. And then LEDs will be there, resistances, capacitance will be there. So let me tell you each and every aspect of the Arduino board. See, this is the Arduino board, and physically also I will show you after explaining this. This is this is the point where USB is connected to power the Arduino board, and we can give the power to the Arduino board from this end also. Now these are the pins you can see from 0 to 13 you can see, and then there is a ground pin. So these pins are called as the digital pins. When you see these digital pins, then you will find out that there are certain pins on which a special symbol is there. Tilde symbol is there. This pin number 3, pin number 5, pin number 6, pin number 9, pin number 10, and 11. That means there are six PWM pins, and the PWM stands for the pulse width modulation. We'll be explaining their uses later on in some experiments. Of course, there are 13 these pins, and the six pins are the PWM, and rest pins are not PWM. But all these pins are called as a digital pin. Digital means that it is 0 or 1. When we can use the PWM pins also as the digital pins, and we can use these pins as the analog pin. On the other side, this side, you can see that there are pins A0 to A5. These pins are called as the analog pins, and most important is the brain of the Arduino board, and that brain is at Mega 328 microcontroller. There are two things. One is the microcontroller and the microprocessor. We are dealing with the microcontroller and not with the microprocessor. Microcontroller are the small chips with the help of which you can do some specific programming, specific tasks can be done with the help of the microcontroller, whereas the microprocessors can do large number of the processes simultaneously. This will be able to do only one process at one time. Then there is an important crystal. This is 16 megahertz crystal. This is like a clock. So it is creating the pulses. Well, this is 16 million pulses per second. 16 millions per second because its unit is 16 megahertz. Mega means million. It is megahertz. Then there are pins on this side. This is V in that we shall be explaining later on. We will be giving some external voltage here, external voltage with the help of some battery. Whenever large amount of the current is required, we shall be connecting that source at the V pin, and then there are two ground pins, and then there are 5 volt and 3.3 volt. These are very important. There are certain devices which will be operating at 3.3 volts, whereas most of the devices in the Arduino, this sensor,
they will be using the 5 volts, 5 volts. And here we are on all our experiments, we shall be using only 5.5 volts, 5.5 volts. Then there is a breadboard. Breadboard. This is a special board with on which we can show the, we can make the large number of the connections, and you can see there is something here. There are horizontal lines from this point to this point. This is a horizontal line from this point to this point. There is again a horizontal line. You can see from this point to this point, all the pins on the horizontal line, this point to this point, they are all connected. From this point to this point, they are all connected. But and similarly, from this point to this point, they are all connected. From this point to this point, they are all connected. But Rajwani sir, just a minute, because Alwale sir has joined. okay, So okay. I'd like to welcome Alwale sir. Yes. Alwale sir, I request Seema Wonderful. ma'am. Yes, so wonderful. Just To welcome Alwale sir. हाँ जी. Alwale sir is the national president of IIPT. He is with us now. Welcome you, sir, in this training program on Arduino. Please continue, and I am there. Okay. In the end, I will talk to you. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Right. Okay, should I continue now? Yes, yes, please continue. आलू साहब, आलू वाले साहब को नमस्कार, मेरा नमस्कार. नमस्ते सर, नमस्ते. सॉरी, मेरी वजह से डिले होगी थोड़ी सी. नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है. वो तो पता नहीं, शायद हमारी तरफ से ही कोई मिस्टेक होगी कि आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था. पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए. आपकी प्रेजेंस हमारे लिए एक मोटिवेशन है. तो मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ. हम ब्रेडबोर्ड दिखा रहा हूँ मैं इस समय. तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे भी हैं. ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जितने भी पिंस हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं. इसमें मैंने आपको 2 चीजें दिखाई हैं, एक ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन, एक नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन. नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने क्या कर दिया है कि 2 जो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है, एक पिन के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई वोल्टेज देता हूँ तो सब वो वोल्टेज हमारे पास पूरे के पूरे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अपीयर हो जाएगी. इसी तरह यहाँ पर अगर मैं देता हूँ तो पूरे लाइन पर कनेक्ट हो जाएगी. पर अगर मैं यहाँ देता हूँ तो वो पिने यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट होंगी और पिने यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट होंगी. अब यहाँ पर जो दूसरे पार्ट हैं, 2 से 2 पार्ट हैं, उसमें क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं. ये वर्टिकल लाइंस हमारे पास बनी हुई हैं. इन वर्टिकल लाइंस के सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, और पर एक वर्टिकल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन के पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है. पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. इस पॉइंट को आप इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिस तरह भी आप चाहें. ठीक है. तो हमारे पास ये यहाँ पर भी 2 ब्लॉक्स हैं. एक ब्लॉक हमारे पास ये है, एक ब्लॉक ये है. इनका स्पेशल पर्पस है. कुछ चीजें होती हैं जो एक जिसका एक पार्ट नीचे की तरफ कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ कनेक्ट होता है. वो जैसे हमारे बटन्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं. हर चीज के लिए एक स्पेशल पर्पस है, और ब्रेडबोर्ड की मदद से हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना चाहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम टेस्ट करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं. फिर ये हमारे पास यूएसबी केबल कनेक्ट होती है. ये जो पार्ट है वो हमारे पास आर्डिनो बोर्ड में जाता है, और ये जो पार्ट है यूएसबी केबल, यूएसबी पोर्ट जो है वो हमारे लैपटॉप के अंदर उसको लगा दिया जाता है ताकि उसको पावर सप्लाई मिले. Somebody is asking how to register on the Tinkercad. That I will tell you. इसी प्रोग्राम में जब मैं उसको बताऊंगा तो वो हमारे साथ बैठे साथ ही वो उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, मेरे साथ ही इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में वो इंक्लूडेड है. ओके सर. हाँ. सो ये हमारे पास कुछ सेंसर्स मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं. ये तो आर्डिनो बोर्ड है और इसमें हमारे पास बटन है. ये जो बटन है वो बटन हमारे पास एक सेंसर है. बटन भी एक सेंसर होता है.
ये हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला हमारे पास DHT11 सेंसर है, जिससे हम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी भी मेजर कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज में मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दूंगा, जिसमें टेम्परेचर वो मेजर करेंगे और ह्यूमिडिटी भी मेजर करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे, दूसरी चीज़ों के ऊपर उसका इफेक्ट देखेंगे। ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जिससे डिस्टेंस मेजरमेंट होती है, और इसका यूज उठाकर हम फिजिक्स के दो एक्सपेरिमेंट्स, फिजिक्स से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास एलडीआर है विच इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये इसके ऊपर जब कोई लाइट गिरती है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, और बेसिक प्रिंसिपल भी इसका कल बताया जाएगा कि क्या चीज होती है ये और कैसे इसका ये काम करती है। इस तरह हमारे पास एक ब्लूटूथ सेंसर है। ब्लूटूथ के बारे में आज की डेट में हर कोई जानता है। ये हमारे पास एलईडीज हैं, ये एलईडी की स्ट्रिप है, और ये हमारे पास एक स्पेशल व्हाइट कलर का एलईडी है। नॉर्मली एलईडीज हमारे पास ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो और व्हाइट होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट्स। ये जो रियोस्टेट होते हैं, जो कई किस्म के रियोस्टेट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हमारे पास जो लेबोरेटरीज के अंदर जो रियोस्टेट होते हैं, उसमें एक सिलेंडर टाइप चीज होती है, उसके ऊपर एक वायर बाउंड होती है, नीचे 2 पॉइंट्स होते हैं और एक ऊपर हमारे पास वेरिएबल कांटेक्ट होता है। सबका बेसिक प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, चाहे वो स्मॉल रियोस्टेट हो, चाहे हमारे पास इस किस्म का पोटेंशियोमीटर हो। इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आप वोल्टेज लगा देते हैं, और जब आप इस नॉब को रोटेट करते हैं तो इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होती है। दैट इज व्हाट वी नॉर्मली डू इन आवर लेबोरेटरी। फिर ब्रेडबोर्ड को यूज करने के लिए, फॉर यूजिंग द ब्रेडबोर्ड वी हैव टू मेक सर्टेन कनेक्शन, and for that we have male connectors, female connectors, and male female connector. However, if you have only the female, this is male female connector and male connector, you need not have the female connector. Yes, female connector, and this male connector, they will be sufficient for producing you may not have the male female connectors. Now I'll tell you how to download this our Arduino software. See, there is a site called as a Arduino.cc. You may type in your browser www.arduino.cc, and a file and a site will open. Similarly, in this program, I have already made some connection links. Therefore, I'll be clicking either on this or clicking on this, and I'll be going to the Arduino CC. So I'm just pressing it, and I'll be reaching a site. इस साइट में आपको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, ब्लॉग एंड अबाउट। पर हमें क्या करना है सॉरी, हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इसलिए हम इसको प्रेस करते हैं। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नीचे आने पर हमें राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शंस हैं: विंडोज, Win7 एंड न्यूअर। विंडोज जिप फाइल, this window application 8.1 or 10. However, you are simply, since Windows 7 and newer means latest Windows, latest Arduino is available here. Therefore, we will press this. Also, I can tell you that आप ये भी कर सकते हैं कि Windows zip को आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसको वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन प्रोग्राम भी बन जाएगा।
पर ये बाद में बात करेंगे। अभी हम इसको सिंपली क्लिक करते हैं विंडोज, आपके पास एक नई नई वो खुल जाती है, स्क्रीन खुल जाती है जिसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो जस्ट डाउनलोड है और दूसरा है कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड। नेचुरली ये जो है ओपन सोर्स प्रोग्राम है, तो उसको डेवलप करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको कर रहे होते हैं। नेचुरली एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें ही। आप जस्ट डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर जस्ट डाउनलोड करते ही आप जहाँ पर भी उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है वो पीसी पर, इसके डेस्कटॉप पर मेरा यहाँ पर क्या होगा, डाउनलोड होगा और मैं इसको डाउनलोड करूंगा। इट विल टेक ओनली फ्यू सेकंड्स। मैं आपको सब चीज करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके पास कंप्यूटर इस समय है, आपके पास इस समय लैपटॉप है, तो आप भी मेरे साथ साथ उसको कर सकते हैं। और ये कुछ सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेता है। ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो गया है ये, ठीक है। और मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं आप या नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, उसमें ये पूछ रहा है कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करता है। मैं उसको यस कह देता हूँ। यस कहते ही वो मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को पहले इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए वो मेरे से पूछ रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्या आप इसको री इंस्टॉल करना चाहते हैं। पर अगर री इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको पहले उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम। आप इसमें जो भी ये कहता जाए आगे, आपके केस में क्या आएगा, अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपके केस में ये पूछता चला जाएगा कुछ चीज़ों को अलाउ करने के लिए। आप यस 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 कहते जाइए और अल्टीमेटली ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इस समय इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर रखा है और वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत आसान है। हर कोई जानता है आज की डेट में कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और फिर मैं वापस जा रहा हूँ। ये मेरा जब तो हमने अब ये यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है अपना आर्डिनो आईडीई, और इंस्टॉल करने के बाद अब मेरा पहला एक प्रोग्राम आता है। उस प्रोग्राम को दिखाने से पहले मैं यहाँ पर पहले शेयरिंग को खत्म कर रहा हूँ। पहले मैं इसको शेयरिंग को खत्म कर रहा हूँ और शेयरिंग को खत्म करने के बाद को खत्म करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीजें। ये आपको दिखाई दे रही है? सर थोड़ा सा और ऊपर। हाँ ये, यस, हाँ, नाउ इट्स विजिबल, अब दिखाई दे रही। हाँ हाँ, हाँ, ये ब्रेड बोर्ड है। इस ब्रेड बोर्ड पर मैंने कुछ चीजें लगा रखी हैं। इस ब्रेड बोर्ड पर जो भी चीजें लगा रखी हैं उससे हम 6 एक्सपेरिमेंट करेंगे। 6 experiments with the components which are fixed on this, and you will enjoy those things। ठीक है, पहले पहले हम जो बनाएंगे वो एलईडी का प्रोग्राम बनाएंगे, एलईडी के जो ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। एलईडी के ब्लिंकिंग का प्रोग्राम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एलईडी ये कनेक्शन दिखाऊंगा, और कनेक्शन दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ पर उसको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वो है, और इसी तरह हमारे पास ये जो है वो ब्रेड बोर्ड है, सॉरी आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो बोर्ड की पिंस के बारे में मैंने आपको सब कुछ अभी पहले बता दिया हुआ है। ये एक और एक्सपेरिमेंट है जो मैंने कल ही डेवलप किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो तो नेक्स्ट उसमें आएगा। पर ये भी ये कल डेवलप किया है।
इसमें म्यूजिक भी होगा और ये जो लाइट्स हैं वो अब उसके साथ नाचेंगी। फिर मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन को शेयर करने के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि रेड लाइट का प्रोग्राम जो है वो क्या प्रोग्राम है। मैंने इसको क्लिक किया और ये मुझे प्रोग्राम के पास ले जाएगा। मैंने लिंक दे रखे हैं अपने उसमें जो मेरी ड्राइव है उसके अंदर मैंने लिंक दे रखे हैं और ये मेरे पास इस समय प्रोग्राम आ जाएगा अभी। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आई वुड लाइक कि पहले आप वो टिंकर कैड इंस्टॉल करा के पहले सर्किट बना दीजिए और फिर प्रोग्राम पे आ जाइए। टिंकर कैड हाँ चलिए हाँ सर, चलिए यस सर, चलिए वो पहले करता आप टिंकर कैड कर दीजिए, फिर सर्किट बना दीजिए और फिर लास्ट में प्रोग्राम पे। चलिए मैं थैंक यू सर। ओके ओके। तो We have R.K. Tiwari sir also with us. We welcome you, sir. Tiwari sir. We welcome. नमस्कार तिवारी सर। नमस्कार घोष सर, वी हैव सीके घोष सर एज वेल एंड रमनिक मैन भी हैं, तो वेलकम तिवारी सर, रमनिक मैन एंड घोष सर, वेलकम। Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, Tiwari. Good morning, everybody. Good Thank morning, you very everybody. much, Tiwari ji, for morning. joining us. तो मैं अब उस स्लाइड पर आ गया हूँ एज डायरेक्टेड बाय दिस प्रेसिडेंट सीमा जी। मैं ये टिंकर कैड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर में जाकर आपको टिंकर कैड जो है ना वो क्लिक करना पड़ेगा, टिंकर कैड राइट करना पड़ेगा और एंटर करेंगे। पर उससे पहले आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल आईडी है या हमारे पास जो है दूसरा जो होता है एप्पल का अगर आपके पास लैपटॉप है तो एप्पल की आईडी आपके पास होनी चाहिए। दोनों में से एक आईडी एसेंशियल है, जिसको ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टिंकर कैड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आपने ब्राउजर में टिंकर कैड टाइप करके और एंटर दबा देना है। जैसे ही आप उसमें करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में वो पूछ रहा है कि लॉगिन। अगर आपने एक बार पहले लॉगिन कर रखा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ही वो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। पर अगर आपने नहीं कर रखी है तो ये लॉगिन करने के लिए पूछेगा आपसे। अगर आपने इनका अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप साइन अप करेंगे, यानी कि अपना एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पर अगर आपका पास जीमेल आईडी है तो नो नीड। मैंने इसको प्रेस कर दिया, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है। इस स्क्रीन में 4 चीजें हैं, एजुकेटर है, स्टूडेंट विद क्लास कोड है, स्टूडेंट अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है। पर आप पर्सनल अकाउंट के ऊपर जिनके पास लैपटॉप है काइंडली आप करते चले जाइए, अपने साथ करते जाइए। पहले ब्राउजर में आप tinkercad.com को आप एंटर कीजिए और उसके बाद उसको एंटर कर दीजिए। जो लोग अभी फर्स्ट टाइम के लिए वेबसाइट पे आ रहे हैं उन लोगों को पहले साइन अप करना होगा ना एक पर्सनल अकाउंट से। हाँ, साइन अप करना चाहिए, पर अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, तो आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप जो है ना एक जीमेल अकाउंट खोल लीजिए। जीमेल अकाउंट से आप जीमेल पर चले जाइए, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। नहीं तो आपने जैसे ही tinkercad.com उसमें एंटर किया, आपके पास एक स्क्रीन आ गई। उस स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, उस स्क्रीन में लिखा हुआ है साइन इन। आप साइन इन को प्रेस कर दीजिए और आपके पास 4 चीजें आ जाएंगी। एजुकेटर्स, स्टूडेंट एंड क्लास कोड, देन स्टूडेंट्स अकाउंट एंड देन पर्सनल अकाउंट। मैं पर्सनल अकाउंट को क्लिक कर रहा हूं और यहां पर भी आपके पास दिखाई दे रही है ईमेल और यूजर नेम। अगर आपने गूगल का अकाउंट नहीं बना रखा है, स्टूडेंट का बना रखा है या दूसरे बना रखे हैं, तो उसमें आपको ईमेल आईडी या यूजर नेम देना पड़ेगा। पर मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट बता रहा हूं, इसीलिए आप क्या करें, यू पुट इन दी साइन इन विद दी गूगल के साथ आप उसको क्लिक करें। जब साइन इन विद दी गूगल करेंगे
तो आपको पास मेरे पास एक्चुअली 3 इस समय जीमेल अकाउंट है। एक मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट है जो कि मैंने उसमें स्लाइड में भी दे रखा है, harisajwani@gmail.com। ये मैंने टेस्टिंग के लिए एक अलग से एक जीमेल अकाउंट बना लिया था, और ये मेरी मिसेस का जीमेल अकाउंट है। मैं इनमें से किसी के साथ भी अपने आप को मैं लॉग इन कर सकता हूं। मैं अपने अकाउंट के साथ इसको लॉग इन करूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हरी सजवानी के ऊपर क्लिक किया है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है, मेरा एक टिंकर कैट के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ये टिंकर कैट के साथ कनेक्शन होने में मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर मेरे पास आ गया है बहुत सारी चीजें। 3D डिजाइन है, सर्किट्स है, 3D डिजाइन सर्किट्स, 3D डिजाइन सर्किट। ओके, मुझे क्या चाहिए आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं सर्किट बनाना सिखाऊंगा। आपके पास एक भी कंपोनेंट ना हो, कोई भी कंपोनेंट ना हो, मोस्टली कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ कंपोनेंट ऑफ कोर्स आपको ऑफलाइन प्रोग्राम में ही बताए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं। मैं सर्किट को प्रेस करता हूं तो इसमें मैंने जितने भी सर्किट्स बनाए हुए हैं, मैंने बहुत सारे सर्किट्स बनाए हुए हैं इस टिंकर कैट के अंदर, बहुत सारे, लार्ज नंबर होगी। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। बहुत सारे टिंकर कैट प्रोग्राम बना रखे हैं, और उन प्रोग्राम में से मैं किसी भी एक प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। आई अगेन गो टू पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ ऊपर यह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है क्रिएट न्यू सर्किट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes. Go ahead. तो ये क्रिएट न्यू सर्किट के ऊपर आप क्या करेंगे, न्यू सर्किट बनाएंगे, और आप देखेंगे कि कितना आसान है इससे काम करना। देखिए, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में रजिस्टर दिखाई दे रहा है, एलईडी दिखाई दे रहा है, पुश बटन दिखाई दे रहा है, पोटेंशियोमीटर दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, साइड स्विच दिखाई दे रही है, और नीचे अगर आप नीचे आते हैं इसको करके, ये आपके पास बैटरी दिखाई दे रही है। ये पास कॉइन सेल जो होते हैं, जो छोटी छोटी घड़ियों में यूज होते हैं, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी, और ये हमारे पास है ब्रेडबोर्ड, और ये मेरे पास है आर्डिनो। मुझे आज आर्डिनो ब्रेडबोर्ड, रेजिस्टेंसेस और एलईडी चाहिए, क्योंकि मैं एलईडी का ब्लिंकिंग प्रोग्राम करना चाहता हूं। इसीलिए मुझे क्या चाहिए, पहले अपनी रिक्वायरमेंट को हम कागज पर लिख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या, करना क्या चाहिए। सो वी नीड ए ब्रेडबोर्ड, वी नीड ए आर्डिनो, वी नीड नॉट परचेज एनीथिंग। हमें परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आर्डिनो के ऊपर क्लिक करके उसको खींच लेता हूँ बाहर की तरफ, और यहाँ पर मेरे पास आर्डिनो आ गया। उसके बाद मैं ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ, ये ब्रेडबोर्ड मेरे पास यहाँ पर आ गया। और अगर आप ब्रेडबोर्ड और जो आपका आर्डिनो बोर्ड है, उसको एक दूसरे के राइट एंगल पर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कनेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब राइट एंगल पर कैसे रखें? मैंने ब्रेडबोर्ड को आर्डिनो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आर्डिनो ऊनो, ये दिखाई दे रहा है। मैंने जिसको क्लिक किया है वो चीज यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो ब्रेडबोर्ड आ गया, ब्रेडबोर्ड आ गया। मैंने इसको क्लिक किया है और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ थ्रू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, ये 30 डिग्री के थ्रू घूम गया, फिर ये 30 डिग्री और घूम गया 60 डिग्री, और फिर मैंने इसको ऐसे किया तो ये 90 डिग्री घूम गया। अब ये 90 डिग्री घूमने के बाद ये यहाँ पर आ गया। जिसको भी आप सेलेक्ट करके और खींचेंगे लेफ्ट की तरफ, वो आपके पास यहाँ पर खिंच जाएगा। और अगर आप अपने माउस के राइट बटन को रोटेट करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी साइज एक साइड में, अगर दूसरी साइड में उसको रोटेट करेंगे तो इसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीजें आप इससे कर सकते हैं। जब मैंने इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया तो उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेजिस्टेंसेस।
ये देखिए मेरे पास रेजिस्टेंस, क्योंकि ब्लिंकिंग वाले सर्किट में मुझे 3 एलईडी चाहिए, एक रेड एलईडी चाहिए, एक येलो एलईडी चाहिए और एक मेरे पास ग्रीन एलईडी चाहिए। इसलिए पहले मैं एक एलईडी को यहाँ पर खींच कर रख लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर पहले ही दिखा रहा है कि ये रेड एलईडी है। अगर आपको कई एलईडी चाहिए, 2 या 3 या 4, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कॉपी वाला निशान, एक स्क्वायर बोर्ड, एक स्क्वायर है, फिर यहाँ पर इसको कॉपी किया और उसके बाद आपने ये जो पेस्ट है उसको किया, आपके इसके साथ हमारे पास दूसरा एलईडी आ गया। दूसरे एलईडी को आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसका भी रेड कलर है। इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से चूज कर लीजिए, ये येलो कलर चूज कर लिया, तो 2 मेरे पास आ गए। फिर मैं दोबारा से उसको क्लिक करता हूँ पेस्ट को, और तो ये मेरे पास ये आ गया। ये फिर मेरे पास रेड है, इसको मैंने कर लिया क्या चीज वाला, क्या कर लिया मैंने, ग्रीन। पर ये कोई जरूरी नहीं है, आप 3 एलईडी यहाँ से भी खींच सकते थे। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं कॉपी करूं और पेस्ट करूं, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक क्लिक कीजिए, खींच लीजिए, फिर दूसरा खींच लीजिए, फिर तीसरा खींच लीजिए। पर अगर आपको 10 एलईडी 15 एलईडी करने हो तो कॉपी एंड पेस्ट मेथड जो है ना वो बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, अब मेरे पास चाहिए रेजिस्टेंसेस भी मुझे 3 चाहिए। ये मैंने रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने ले ली। उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस 1, और इधर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है किलो ओम। किलो ओम की बजाय मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली मुझे रेजिस्टेंसेस जो चाहिए वो 220 ओम की रेजिस्टेंसेस चाहिए, 220 किलो ओम नहीं, बल्कि क्या चाहिए बोला, ओम। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने जो एलईडी रेजिस्टेंस ले रखी थी उसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, रेड एंड ब्राउन। रेड एंड ब्राउन, रेड का नंबर होता है 2, जो कि हम पढ़ाते ही हैं, सारे के सारे 12th क्लास के अंदर सभी को पढ़ाया जाता है। रेड का कलर होता है 2, रेड कलर का फिर 2 है और ब्राउन का 1 है। तो जो थर्ड कलर होता है उसका जितना भी नंबर होता है उतने 0 हमारे पास पहले 2 नंबर्स के सामने लगा देते हैं। तो 2 और 1 0 यानी कि 220 ओम। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं किलो ओम चूज करूं तो आप देखेंगे कि ये कलर कोड अपने आप ही चेंज हो गया। तो हमें चाहिए एक्चुअली ओम 220 ओम, 220 ओम मैंने ये ले लिया। ठीक है, 220 ओम ये मेरे पास ये आ गया। और फिर मेरे पास दूसरा भी 220 ओम चाहिए, मैं दूसरा 220 ओम यहाँ से ले रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 220 करना पड़ेगा, 220 और किलो ओम की जगह मुझे ओम करना पड़ेगा। पर देखिए आप, मेरे पास क्या मेथड, इजी मेथड क्या था, इजी मेथड था कॉपी एंड पेस्ट करना। इसको मैं क्लिक कर दिया, ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया और ये मेरे पास जो तीसरी रेजिस्टेंस आ गई वो भी मेरे पास 220 ओम की रेजिस्टेंस ही आ गई। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, जो एक सर्किट बनाना है उसका। तो हम क्या करते हैं, इसका जो ग्राउंड है, जो हमारे इसका आर्डिनो का जो ग्राउंड है उससे हम एक लाइन लेते हैं, खींचते हैं, यहाँ पर जाते हैं, फिर हम लाइन खींचते हैं और इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमने पूरी लाइन को, आप देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना रखा, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्टेड दिखाई दे रही है। और क्योंकि ग्राउंड का कलर नॉर्मली ब्लैक होता है, तो यहाँ से हम ब्लैक कलर हमने चूज कर लिया, तो ये मेरे पास ग्राउंड जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो मेरे पास ग्राउंड है। अब मैं एक रेजिस्टेंस को उठाता हूँ, एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर उठा दिया और उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए ये इसका जो ये एंड है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया और दूसरा एंड यहाँ पर आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। फिर मैं दूसरे को उठाता हूँ और उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और फिर मैं तीसरे को उठाता हूँ फिर यहाँ पर लगा देता हूँ। इनफैक्ट हमने 3 रेजिस्टेंसेस लगा दी और ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, नेगेटिव पॉइंट है।
और हमारे पास मैं पहले कौन सा लूंगा, रेड लूंगा, फिर मैं क्या लूंगा, येलो लूंगा, और इसके बीच में भी मैं स्पेस बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर ये कर दिया। और ये देखिए इस एलईडी को मैंने उठाया, इस एलईडी को उठाकर इस पूरे लाइन में कहीं पर भी रख दूंगा, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, ये एनोड है, और ये क्या चीज है, कैथोड है। नेगेटिव से जो आ रहा होगा वो नेचुरली कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। तो ये मेरे पास पॉजिटिव लाइन बन गई। इसी तरह मैं दूसरे को उठाया और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो इसका ये जो एंड है, ये जो एंड है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड हो गया, ये हमारे पास क्या है, एनोड है। और फिर मैंने तीसरा उठा लिया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए कंप्यूटर में ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं 0 से लेकर, इन एलईडीज को मुझे कनेक्ट करना है, अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं इसको पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है D10 आ गया, ये D10 कनेक्ट हो गया। और इसको मैं D9 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ D9 के साथ, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ D8 के साथ। D मतलब डिजिटल पिन। तो मेरे पास कनेक्शन क्या हो गया, यहां से गया नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस के थ्रू आया, वो हमारे पास एलईडी पर चला गया, और एलईडी का जो दूसरा एंड है वो हमने एक पिन को कनेक्ट कर दिया। क्योंकि कमांड्स हम पिन के थ्रू देंगे, और हम चाहे इस तरह बनाएं चाहे दूसरे तरीके से, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, पर इस समय आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। मैं चलिए थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई भी कर देता हूँ। यहाँ से आया, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, और यहाँ पर गया। और इस लाइन का जो कलर है वो मैं क्या ले लेता हूँ, इस लाइन का मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन। इस लाइन का जो कलर है इस लाइन का जो कलर है इस लाइन का कलर मैं क्या ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। और इस लाइन का जो कलर है वो मैं रेड ले लेता हूँ। हाउएवर ये बात सिर्फ हमें पता है कि रेड बल्ब के साथ रेड कलर, येलो कलर के साथ येलो है, और ग्रीन के साथ ग्रीन है। कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, आर्डिनो को इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी कलर के लगा दीजिए, सिर्फ पिन से मतलब है उसको। 8, 9 और 10 पिन हमने यहाँ पर ले ली। अब आती है बात प्रोग्राम की। इसको रन करना है, इसको हमने रन करना है। कैसे रन करेंगे, रन करने के लिए यहाँ पर सिमुलेशन दे रखा है, पर सिमुलेशन से पहले कोड तो लिखना होगा, इसको कुछ बताना होगा कि हमें क्या करना है। देखिए जैसे ही मैं कोड को दबाता हूं तो मेरे पास दो किस्म के जो आ जाते हैं। यहाँ पर तो जो डिवाइसेस अवेलेबल है इनके पास, और जो यहाँ पर मुझे आसान तरीके से क्या करना है, इसको टेक्स्ट में बदलना है। मुझे तो टेक्स्ट प्रोग्राम चाहिए, टेक्स्ट का प्रोग्राम। जैसे ही मैंने टेक्स्ट दबाया, इसने अपना प्रोग्राम एक लिखाया यहाँ पर दिखा दिया। मुझे ये प्रोग्राम नहीं चाहिए। मुझे प्रोग्राम कौन सा चाहिए, मुझे प्रोग्राम चाहिए मेरा अपना प्रोग्राम, जिसको मैं आर्डिनो से पहले टेस्ट कर लेता हूं। और मैं वो प्रोग्राम जो है ना वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। ये मेरे पास जो प्रोग्राम है, ये सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं फिर आपको ये प्रोग्राम समझाऊंगा।
इस प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देता हूं। मैंने क्या किया है, सारे प्रोग्राम को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, आपके जो लैपटॉप की मेमोरी में या आपके डेस्कटॉप की मेमोरी में ये सारा का सारा प्रोग्राम है। और जब मेमोरी में प्रोग्राम है तो आप जानते हैं कि कैसे उसको पेश किया जाता है। मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाऊंगा जब मैं, तो कंट्रोल सी दबाते ही सारा प्रोग्राम इसके अंदर नहीं हुआ। सर वहां पर कंट्रोल सी करना था सर आपको, और यहाँ कंट्रोल ओहो सॉरी। चलिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, एंड then I come here and control V। ये प्रोग्राम आ गया। अब इस प्रोग्राम को मैं देखिए, यहाँ पर मैंने एलईडी जो आपने लगा रखा है, जो हमने एलईडी लगा रखा है, वो कहाँ पर लगा रखा है? एलईडी कहाँ पर लगा रखा है? LDR जो है ना, हमने 8 पर लगा रखा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। या यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो येलो है वो मैंने 9 पर लगा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 9 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो ग्रीन है वो मैंने क्या बना रखा है? 10 बना रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको 10 कर देता हूँ। सर एलईडी आर जो है वो 10 पर है और ग्रीन जो है वो 8 पर है। ऑलरेडी R 10 पर है। हाँ जी। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इसको 10 कर दिया, 10 कर दिया, और फिर इसको तो 9 ही रहने दिया, और इसको मैंने 8 कर दिया। इट्स ओके। यस सर, इट इज फाइन नाउ। हाँ, अब जब ये सारा का सारा प्रोग्राम आ गया तो उस प्रोग्राम को मैं पहले रन करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। ये स्टार्ट सिमुलेशन है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया और आप देखेंगे पहले मेरे रेड जल गया। दस सेकंड के लिए ये रहेगा। अब ये मेरे पास येलो जल गया, ये 2 सेकंड के लिए रहेगा। फिर मेरे पास ग्रीन है, ये 10 सेकंड के लिए रहेगा। फिर येलो जल जाएगा और फिर हमारे पास रेड जल जाएगा। तो रेड, येलो, ग्रीन, देन येलो एंड देन रेड। सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। देखिए ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। मैं सिमुलेशन को क्लोज कर देता हूँ इस समय। मैंने किया क्या, मैंने अपना प्रोग्राम पहले बनाया था आर्डिनो के अंदर, उसी को मैंने कॉपी किया है और सिमुलेशन वाले इसमें जाकर मैंने, ये जो टिंकरकैड वाले उसमें जाकर मैंने कॉपी कर दिया है। कोई जरूरी नहीं था कि मैं ऐसा ही करता। इट वाज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि मैं ऐसा ही करता। मैं यहाँ से पूरा प्रोग्राम अपना लिख सकता था, दोबारा अपना लिख सकता था। मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ये काम करना आसान हो जाए। देखिए अब मुझे यहाँ पर तो एक्चुअली दिखाई दे रहा है, जब मेरे पास ये है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो मेरे पास कहाँ पर है? 10 पर है। येलो जो है वो मेरे पास 9 पर है और जो ग्रीन है मेरे पास वो 8 पर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता था। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर INT LED R, जिस पिन को आप जिस चीज को आप जहां पर कनेक्ट करना चाहते हैं उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर LED रेड भी लिख सकता था, LED येलो भी लिख सकता था, LED क्या ग्रीन भी लिख सकता था। ये वेरिएबल का नाम जो है ना वो आपकी चॉइस है, इट इज योर चॉइस ओनली। So what name you give, but it is sufficiently, it is serving my LED R. R means red, Y means yellow, and G means green. So I have taken a logical name. आपको भी जो नाम लेना होगा वो लॉजिकल नाम ही रखना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देन आई वांट कि ये जो रेड है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जलना चाहिए। ये जो येलो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चलना चाहिए। ये ग्रीन जो है ना पर्टिकुलर टाइम के लिए चलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अगर एक बार उसको ऑन कर दिया तो उसको मैं डिले रखूंगा, यानी कि वो उसको मैं ऑन रखूंगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो नेचुरली मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो ये बताएगा कि कितनी देर के लिए रेड लाइट को हमने ऑन करना है। यहाँ पर इस समय 10,000 लिखा हुआ है। मैं इसको अब 5,000 कर देता हूँ। दिस इज 5,000। और जो येलो है उसको मैं 2000 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 1000। ये 1000 का क्या मतलब है?
इट इज मिली सेकेंड। ये जो टाइम होता है, ये जो मेजर करता है, उसको वो मिली सेकेंड में मेजर करता है। तो 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड मीन्स 5 सेकेंड, एंड 10,000 ग्रीन को मैं थोड़े से और टाइम के लिए क्या क्या कर देता हूँ, मैं 7000 कर देता हूँ। तो मेरे पास हर कलर के लिए अलग अलग टाइमिंग्स हो गए। और फिर मैं आगे जितने भी पिन्स आप यूज करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए। किसी भी प्रोग्राम में 2 फंक्शंस एसेंशियल हैं। एक फंक्शन है मेरे पास वॉइड सेटअप और दूसरा फंक्शन है मेरे पास वॉइड लूप। ये दोनों फंक्शंस हमारे पास एसेंशियल हैं। और किसी भी फंक्शन को में क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, वो हमारे पास ये स्टार्टिंग ब्रैकेट जो होती है, ये जो कर्ली ब्रैकेट होती है, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट होती है। ये हमारे पास एक इसका ब्लॉक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। ये इसका एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, ये हमारा सेटअप जो फंक्शन होगा वो वही काम करेगा। अब वर्ड सेटअप में मैंने क्या किया है, जितने भी डिवाइसेस आप यहाँ पर यूज करेंगे, उनके कहीं ना कोई पिन होगा, और उसको हम बताएंगे कि वो जो पिन क्या करेगी, वो जो उसका पिन का मोड क्या होगा, या इनपुट होगा या आउटपुट होगा। देखिए, जब हम किसी चीज को रीड करते हैं, मैं अब समय सामने वाली जो चीज है मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो मेरा आंखों के थ्रू मेरे ब्रेन के अंदर ये जा रहा है, मैं इनपुट ले रहा हूं। क्या चीज? पढ़ते वक्त। पर मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूं कोई चीज, तो उसको मैं क्या करता हूं, बोला आउटपुट लेता हूं। जैसे जो हमारा बल्ब है, बल्ब लाइट देगा, जब क्योंकि लाइट देगा तो इसलिए वो आउटपुट मोड में है। जो भी चीज कुछ देगी वो आउटपुट मोड होगा। जब कोई चीज लेगी तो वो क्या होगा, हमारे पास इनपुट मोड होगा। जैसे रीड कमांड होगी, जब किसी चीज को रीड करेंगे तो इसका मतलब है हम उसको इनपुट ले रहे हैं, और जब हम उसको कर रहे हैं राइट करो, तो उसका मतलब है हम उसकी आउटपुट ले रहे हैं। तो क्योंकि ये बल्ब हमारे पास, अगर हम यहाँ पर कोई स्पीकर यूज करें, तो स्पीकर तो हमें साउंड देता है, इसलिए स्पीकर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट मोड होगा। तो हमें पिन मोड लिखकर LEDR रेड लाइट, उसका पिन हमने ऊपर पहले डिफाइन कर रखा है। जिस को भी आपने यूज करना है, उसके पिन को पहले आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, और उसको डिफाइन करने के बाद उसके बारे में बताना पड़ेगा कि वो आउटपुट की तरह एक्ट करेगा या इनपुट की तरह एक्ट करेगा। तो अब हमारे पास ये एक्ट कर रहा है एज एन आउटपुट। येलो भी हमारे पास आउटपुट एक्ट कर रहा है, और ग्रीन भी हमारे पास आउटपुट एक्ट कर रहा है। कोई और चीज हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारे पास 3 ही पिन मोड हो जाएंगे। उसके बाद वर्ड लूप में क्या कर रहे हैं, वर्ड लूप ये भी एक फंक्शन है। इसका ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है, और उसका जो ब्लॉक खत्म कहाँ पर होता है, ब्लॉक उसका खत्म यहाँ पर होता है, नीचे जो हमारे पास है। अब नाउ यू जस्ट सी, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिजिटल राइट LEDR, 1। आई एम आस्किंग इट कि ये जो रेड लाइट है उसको डिजिटली राइट कर दो, क्योंकि उसके ऊपर जब राइट करने का मतलब यहाँ पर वो तो या तो आप उसको ऑफ कर देंगे या उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑफ करने का मतलब है उसको 0 वोल्टेज देना, और ऑन करने का मतलब है उसको 5 वोल्ट देना। अब डिजिटल में जो होता है वो मैंने आपको बताया, इट ओनली गिव्स यू आइदर 0 और इट गिव्स यू 1। सिमिलरली उसमें क्या होता है, हाई को 1 कहा जाता है और लो को 0 कहा जाता है। हाई इज 1, लो इज 0, yes is 1 and false is 0। तो हाई, लो, yes, no, false and true, ये जो तीनों चीजों को यूज किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर हर जगह पर, आप नीचे अगर प्रोग्रामों में देखेंगे कि लो हाई ऐसे लिखा हुआ है। ऊपर मैंने जानबूझकर 1 0 दे रखा है ताकि आपको पता लगे कि 1 और हाई एक ही चीज का, 0 और लो एक ही चीज है। तो ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है। LEDR को उसने 1 कर दिया, LED येलो को उसने 0 कर दिया, और डिजिटल LEDG को उसने लो कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, 0 करने का मतलब है वहां पर वोल्टेज 0 हो गई, 1 का मतलब है वहां पर वोल्टेज 5 वोल्ट हो गई,
वोल्टेज 5 वोल्ट हो गई। जितने भी डिजिटल पिंस हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 5 वोल्ट होती है। जो आर्डुइनो ऊनो में ये डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 5 वोल्ट होती है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो इसका मतलब है उसको क्या मिल गई, 5 वोल्ट हो गई। और 5 वोल्ट मिलते ही हमारा जो एलईडी है वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। पर अगर मैं ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता तो ये हमारा ग्लो तो करता, पर हमारा बल्ब जो है ना वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने उसके करंट को लिमिट करने के लिए क्या किया है, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया। अब ये रेड तो जल गया, अब कितनी देर के लिए जला रहेगा, जितना मैंने डेल आर कहा है। ऊपर मैंने डेल आर कितना बता दिया यहाँ पर 5000, यानी कि 5 सेकंड के लिए अब जलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने रेड को तो लो कर दिया, येलो को हाई कर दिया, ग्रीन को फिर लो कर दिया, और उसके बाद मैंने डिले किसके बराबर कर दी, येलो के बराबर कर दी। फिर मैंने क्या कर दिया है, जो जो एलईडी आर को लो कर दिया है, एलईडी वाई को लो कर दिया है, और एलईडी जी को, ग्रीन को हाई कर दिया है। कितने टाइम के लिए, जितना हमने डेल जी में बताया है उतने टाइम के लिए। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है बोला, फिर हमने हाँ फिर दोबारा से हमने क्या कर दिया, रेड को लो कर दिया, येलो को फिर हाई कर दिया, और ग्रीन को ये कर दिया। और लूप फंक्शन का मतलब है जब प्रोग्राम यहां से चलकर यहां तक आएगा उसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। दिस विल कंटिन्यू टू रिपीट। अब क्योंकि मैंने टाइमिंग चेंज कर दिए हैं, इसलिए मैं जब स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये टाइमिंग भी चेंज हो गया है। ये 5 सेकंड के लिए चलेगा, ये 1 सेकंड के लिए, ये हमारे पास 7 सेकंड के लिए। तो जो भी रेड लाइट्स होती हैं, जहाँ क्रॉसिंग्स होती हैं, वहां पर इस छोटे से प्रोग्राम के थ्रू ही उनके टाइमिंग्स को सेट किया जाता है। नथिंग एल्स हैज टू बी डन। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्डिनो से हमने जो टिंकर कैट से वही प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम आर्डिनो में एक्चुअल आर्डिनो में बनाते, वही प्रोग्राम हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर हमने जो ये बनाया है, हमने ये सर्किट बनाया है, उस पर ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नाम आ रहा है, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई यहाँ पर नाम दे देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके मैं क्या करता हूँ बोला, 3 LED ब्लिंकिंग कर देता हूँ। और जब मैंने इसको ऐसे किया और यहाँ पर प्रेस किया तो इसका नाम बदलकर 3 LED प्रिंटिंग हो जाएगा। अब अल्टीमेटली फिर फाइनली आप क्या करेंगे, फाइनली आप इस टिंकर कैड को यहाँ पर प्रेस कर देंगे, और ये जो आपकी जो डिजाइन है वो आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ये हमारे पास, ये देखिए मैंने बनाया था, अभी प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो 3 LED प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो इस तरीके से अगर मैं कोई और भी प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। ये प्रोग्राम मैंने कल बनाया था, LED फॉलोइंग जैसा। देन PWM प्रोग्राम है, 3 LED ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट मैंने पहले भी बना रखा था, अब आपके सामने बनाया है। तो इन दोनों में से मैं किसी को भी अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम बने हुए हैं। यहाँ पर वाटर टैंक एक्सपेरिमेंट है, ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर देयर, ठीक है। एंड आई होप कि अगर किसी को और भी प्रोग्राम बनाना चाहता है अगर कोई, तो मैं एक प्रोग्राम और बना के दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे कि ये जो प्रोग्राम है वो टिंकर कैड के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है। और अगर दूसरे प्रोग्राम भी आप चाहते हैं तो मैं आपको उनको बनाकर दिखा सकता हूँ। जैसे ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, PWM पिन प्रोग्राम। जैसे मैं किसी प्रोग्राम को, जो मैंने प्रोग्राम पहले बनाया हुआ है, जब मैं उस प्रोग्राम को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आ जाता है
डिजाइन बाई, क्योंकि आपने बनाया होगा तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जिस टाइप को बनाया होगा वो आपका आ जाएगा। और ये कहता है कि टिंकर दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंकर दिस? टिंकर दिस का मतलब है कि आप इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो वो प्रोग्राम मेरे पास यहाँ पर आ गया, और इस प्रोग्राम का कोड मैंने यहाँ पर पहले डाला हुआ है। ये मैंने प्रोग्राम डाला हुआ है, तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। यहाँ पर मेरे पास देखिए, अगर इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर भी लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। और उसी तरह तीन एलईडीज का यहाँ पर लगी हुई हैं, 3 एलईडीज लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये ग्रीन एलईडी ग्रीन कलर के थ्रू यहाँ लगा दी, येलो ये उसके साथ लगा दी, रेड इसके साथ लगा दी। अलग अलग तरीके हैं आपको कनेक्शन करने के। यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट का एक एंड जो है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, बोला नेगेटिव को कनेक्टेड है। और रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, मेरे पास रेड पर कनेक्टेड है, ठीक है। अब येलो जो है, ये जो बीच वाला जो है, जो रीड करेगा, बीच वाला जो पॉइंट है जो रीड करेगा, वो मैंने जो 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 लॉग जो हमारे पास ये जो एनालॉग पिन्स होती हैं उसके किसी एक पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने उसको A0 के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब क्योंकि ये जो है वो रीड करेगा, वोल्टेज को रीड करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास हमारे इनको जलाएगा, इसीलिए वो डिवाइस कैसा होगा, इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि ये रीड करेगा। अब क्योंकि मैंने 3 तो एलईडीज ले रखे हैं और एक मैंने पोटेंशियोमीटर ले रखा है, इसीलिए हमें जो सेटअप है उस सेटअप के अंदर कितनी चीजों का पिन मोड सेट करना पड़ेगा, 4 चीजों का पिन मोड सेटअप करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी पिनों को आप यूज करेंगे, जितनी भी पिन को, 3 तो पिन हमने यहाँ पर यूज की है, एक पिन मैंने यहाँ पर यूज की है, तो जितनी भी पिन्स को आप यूज करेंगे उतने कॉरेस्पॉन्डिंग सेटअप में आपको पिन मोड बताने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके बाद क्योंकि मैंने आपको एक्चुअल वो दिखाना है, ठीक है। यह देखिए, पोटेंशियोमीटर पिन को मैंने A0 कह दिया, ये रेड इसको मैंने रेड एलईडी कह दिया, वहां पर मैंने क्या कहा था, एलईडी R कहा था, यहाँ पर ये वो कर दिया। ये इस तरह के मैंने अलग अलग कह दिए हैं। पर जरा इसको सेटअप को देखिए, सेटअप में मैंने 4 पिन मोड लिए हैं, 4 पिन मोड लिए हैं, ठीक है ना। दिस इज एक आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, और जो कौन सा है इनपुट, हाँ ये जो पोटेंशियोमीटर पिन है वो हमारे पास इनपुट मोड है। क्योंकि ये मैंने पिन फालतू ले लिया है, ये इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I have a doubt. Like in the previous coding that you had taken, you had taken for red light 0 Hello? and for yellow light to be 0, and the third one was low. So can't we take for red light also high and yellow low, or it is necessary to define them as 1 and 0 initially? Yes, you can. Wherever low is written, you can write down 0, or Okay. wherever high is written, you can write down 1, and it will work exactly similarly. Similarly, it will work. Similarly, if wherever there is a 0, if you write down low, and wherever there is 1 and you write down high, it will be perfectly okay. But then you have to be very careful that LOW must be in capital letters. Okay, sir. And the high HIGH must be in the capital letters. Reserved words are used as they are there. Okay. So, Yeah. so I'm not going to run it now because I want to show you practically the experiment that I have already shown you. Okay. So of course you can start simulation. Start simulation is there. I'm not explaining the program. I'm just did you see? You can see one thing, observe one thing only.
so that later on you understand. The red bulb has gone off, and the intensity of the other colors is decreasing. Now, when I move it to this side, the intensity of the yellow and green color is increasing, and at some point the red light is also becoming on. When voltage becomes slightly larger than a particular value, then of course it is either 0 or it is called as a 1. So when it becomes 1, this is not connected to this pin is connected to a pin number 7, which is not a, you can see that it is not a PWM pin. It is not a PWM pin. So it will accept either 0 or it will accept 1. So when I'm rotating the potentiometer, what is happening is that it is up to certain level, it is assuming the voltage to be equal to 0, and after that level, it is assuming the voltage to be 1. That means 5.5 volt, 5 volt. Okay. However, pin number 9 and pin number 10, you can clearly see that they are the PWM pins. With the help of the PWM pin, you are able to read whatever is the actual value, not 0 and 1, at actual value, and based upon that value, the intensity, the more or less current will be passing through these bulbs, and therefore, when the current is more, this will be brightness of this will be more. When current is less, the brightness of this will be less. Okay. So I'll be now demonstrating to you the actual program. I will make the circuit, physical circuit in front of you. Okay. So I'll be stopping stop sharing. I'll be, and then I will choose a webcam, different webcam. Are you able to see this webcam? Yes, sir. Are you able to see this device? So now I have actually 3 cameras in my this laboratory. This is the device which you can see that I have already told you that we will be able to perform 6 experiments with the help of this breadboard, on which I have connected few things, and I'll be demonstrating 3 experiments. Today, I shall be demonstrating only 1 experiment, and that experiment is the experiment which we have just shown. And that experiment is 3 LED blinking, one after the other for a particular time. So just see. This is the red one, red LED. This is the yellow LED. This is the green LED, which I have fixed on this breadboard. What I have done is this point where this whole of this line I shall be making as negative. So I'll be connecting it to the ground. So from ground it goes to this point, and since whole of this line is connected, all these points on this line are connected to each other. Therefore, this point will be connected to this resistance, and this point has to be connected to either pin number 8, or this will be connected to pin number 9, and this will be connected to the pin number 10, depending upon what is there in our program, Arduino program. Okay, so let me again share a screen for some time so that I can bring the program. First of all, let me make the let me not make the connection. Okay, so I have come back again to the red light crossing program. So I click it, come to my program, and in this program I have given LED R is equal to 7, LED yellow is equal to 9, and LED G is equal to 10. I have given 10,000 time here, 2,000 time here, and I'm just changing it to 5,000, then this is 1,000, and I'm changing it to
it to say 7,000 or 8,000, say 8,000. Now, once you have a program, once you have made a program in the Arduino, this program has to be verified first. So I will, this is a click mark. If I click it, then it will verify whether the program is correct or not. Once I click on this, so it says that done compiling. Compiling is done. Therefore, we are very sure that this program is correct. After compiling, you have to go to the tools. And you have to connect your Arduino board with some port. You can see here that as Arduino Uno is connected, but then Arduino board is not connected. So I am connecting it to the board. You can see that previously port was not visible, and it was ghost also. Arduino Uno is there. This is Arduino port, and that port is COM7. So whatever port is visible here, it's possible, quite possible, that there are two, three ports available. But if there are 2-3 ports available, then one of the port will be for the Arduino, and you have to select that port only. But in my case, it will be only one port. It will be showing at one time. So this is now the first thing after compilation is, therefore it's very compulsory that first thing component, you go to the tools, and from the tools you select the proper board, and then proper communication port. Okay, once this is done, now you can compile the now you can upload the program. For uploading the program, you just click on this point. I have clicked it. I'm clicking it, and it says that it has done the uploading. Within seconds, it says that it has done the uploading. Once the uploading is done, let me show you something, which is, this is Arduino board. I have not connected even a single component on this, but program is uploaded. This is the beautiful thing that you must understand. It is not necessary for you to make the circuit complete circuit on the Arduino board before loading the program. You can test the program, load the program without using any component to the Arduino board. Now, since the program is compiled and uploaded, therefore now I have the choice to make the connection. So I'll be making connection now in front of you. Just see how do I make. I have a box in which I have put large number of the male connectors, and I'm connecting now first of all the negative line using my black. So here is a ground pin. Which I connect at any point on this line, to which these resistances are connected. So I connected to this point. So whole of this line is now negative. Now in my program,
red was at the program that I showed you. Yeah, so again I can share the screen and show you the red light. This red is connected to 7, yellow 8, and this 9. So I will again show you that I will be connecting the red to pin number 7. So I'm choosing this red connector. Pin number 7 is here, and red is this one. Red is this one, so I connect it to red. Then yellow, I pick up a yellow wire that is connected to pin number 8. So this is pin number 8, and then this is connected to yellow. And then green, then this is green. Green is connected to the 10 number. Green is connected to 9, I think. You can see that as I continue to connect the wires, the whatever bulb was was in the line was connected, it started glowing as per the program. So you can see at the moment it is green, which is going on. Green, the red, then yellow, then green. Then again yellow, then again red. So you can see how easy it is. The same program, the pins that we defined in this particular program was 7, 8, 9, and pins that we defined in the Tinkercad were 8, 9, 10. It is a matter of defining the pin and making the connection accordingly. Once you define the pins and make the connections according to your pins, then of course the program will automatically run. Absolutely, you can see that there is no problem in running this program. So now again I share my screen, close this program, and then the next slide. This is a program of LED. I am just removing all the connections again, so that breadboard and Arduino board are not connected at all. Let me show you the program first of all, and then explain to you a few things. Sir, sorry to disturb you again. I think again you first do it with the Tinkercad and then show it in actual, because they can make out very clearly that which pin is attached to which one. So Tinkercad helps them to have some kind of basics. Okay. I think if there is no problem, can anybody on behalf of participants guide me in this regard? Am I okay? Who? Participants? Yeah, I'm just asking for the feedback. I mean, is it fine? If anybody would like to comment, please, you can. So I again go to
go to the Tinkercad. I click on this. Since I was already connected to this, therefore it has given me, it has directly connected to me. Now I'm going to this one, and then of course we can make new circuit also. It will be easier for me to make new circuit then find out where it is. So again, what do we want? We want a photovoltaic resistance. So I go down. First of all, I will need one breadboard, one Arduino, and I will rotate this Arduino to 90 degree. Keep it here. Keep it here. It's up to you on which side you want to keep this breadboard, on which side you want to do this thing. Okay. So I have put them in at right angle to each other, and then there is a photoresistor. This is called a photoresistor. Is a LDR. Photo means light. Yeah, the photon. It comes from the photon. So photoresistor is a resistor whose resistance varies with the intensity of the photons falling on this. That means intensity of the light falling on this. So I take this out. Okay. So this is a and then I need a resistance also. I need a resistance. I have this resistance. This I will keep 10 kilo ohm. So this is 10 kilo ohm. Why I am doing this? If you buy this photoresistor from the market, you will find out that its resistance is of the order of few kilo ohms. So once these two are connected in series, once these two things are connected in series, say suppose I connect it to this point, in series, then what happens is whatever voltage we apply across from this point to this point, that will be divided among this resistance and this resistance. And therefore, if you allow the light to fall on this, its resistance will change, but this resistance will not change. Since this resistance does not change and this resistance changes, therefore there is a voltage variation is there. Voltage variation is there at this particular point, at this particular. And that voltage variation is called as a signal, and therefore our Arduino, this photoresistor, that will measure the signal. So what I'm doing now is I'm taking this. Oh, sorry. One of this I have to delete. I'm bringing this here. So one end of the resistance is here, another end of the resistance is here, and whole of this line is connected. So I bring my photoresistor to this point. And I am connecting or I could do like this. See, this is one end of the resistance. This is another end of the resistance. This end of the resistance is connected to the photoresistor, that is the LDR, and this is the another end. Now this end is a common end. This common end has to go to wherever we want to read the value or read the signal. So I'm bringing it here, take it here,
go to this point, and then since it has to be analog reading, therefore I am connecting it to the A0. And to beautify it, yes, this is in line. And I would like to give it the orange color, whatever color you want. I mean, it's not necessary that you give. So what is there? The common point of the resistance and the photoresistor is connected to the A0, where it will be reading the signal. But some voltage has to be given to this particular point, and some voltage has to be given to this end. So what I do is I can directly take this voltage, say 5 volt, and connect it to this point. But I'm not doing that because I want a standardization. That standardization means I'll be connecting it to this particular point. So this is 5 volt. This 5 volt, and this I will give the color red, because normally the high voltage will say positive voltage is given by the positive, and same then I will connect the ground. Since ground is here, and there will be so I'm taking this ground. So taking this ground, go here, and connect it to this particular point. So whole of this line is now ground, and whole of this line is positive. Okay, and for the ground, I choose the color black. Once it is done, now I have to apply positive voltage, 5 volt voltage to this particular point. So I can connect this to positive, and then later on I will. This has been connected to the positive, and what color should I give? I should give the color red. Okay, so this end is connected to the red. And now, what about this? What about this? It has to be given negative. So I connect this to this particular point to this line, and this is our black. So you can see that at this end of the resistance, I have given the negative. Oh, this is wrong. Yes. So this negative is coming to this particular point, and this positive is coming to this point. So resistance now, and at this point, this common point I have connected already to A0. Where is? Yes. This common point we have already connected to the A0. Now program. We have to read the program, and let us see how do we make the code. So I'll be picking up again the code. Say for the code again, you can see that this block is coming. Instead of using the block, what we shall be doing is we shall be choosing the text. It will continue. It has given its own program. So I'll go to my program, and copy from there. So I stop sharing from here. Then go to the yes, why not share? Sir, there is a query in a chat box from Subrajyoti Vishwas. He's saying that negative point is not correct.
Can you Negative point is explain him not to? there. Let me Yeah, see. it's a This kid's is ground. toy. This is ground. This ground and whole of this line is negative. Whole of this line is negative. And once, see, and this negative, and then this is negative. This negative is coming. Yeah, it's corrected, sir. Fine. You're correct. Eh? Take it. There is nothing wrong in this. And this point is connected to the positive, and whole of this is positive. Where is the mistake? No, sir. He has admitted now. It's corrected. Yeah, because we are here being interactive as well. We Yes, want people to understand. surely, yes. No. They say if there is a mistake, the program will not run at all. Yes, sir. Oh, Okay. You okay. continue. Yes, then I go to the my program. Yes, this is LDR program. Control A, Control C, and then I come to close this program, this, and then I choose whole of this, and then Control V. See, let me run it first, and then show you what is happening. Okay, so program, once it is loaded, so I'm just initializing it, and you see nothing is happening. Isn't it surprising? No, it's not surprising. It is there. There's a Tinkercad's duty. This is the device which is reading the values. So I clicked it, and automatically a source of the light has appeared here. Because we want to change the intensity of the light on the LDR, and its resistance has to change. Okay. So on the monitor also, I am showing you certain values. See, I am down now increasing this, taking it to some point on one side. Yes, there is some mistake. Nothing is changing. It is continuously showing 1023. 1023. Let us see stop the simulation. Stop the simulation. And the LDR is at pin number 8. LDR we have connected at LDR we have not used. Yes. So based upon what value is it getting, our LDR should either become on and or LED should become on and off. So for that, again, there is a very simple program. So we are choosing again an LED. We choose an LED. We choose a resistor. Take its value equal to 220 ohm, 220, and this is ohms. And then for this, we are choosing, of course, the red. So I'm taking it to this side. And just as we did from this is now the negative side. So I have connected the one end of the resistance to the negative, and second end of the resistance to the and the same end of the LED to that particular line. And then this line has to be connected to the pin number 8. According to our program, this pin has to be connected to the pin number 8. So you go to this, come like this, you find out pin number 8 is here, pin number 8, and I give it color, say red. So
bring it here slightly, bring it here slightly in line with this. So this is the LED connection we have already made now. So let us start simulating again. So simulate this one. Oh, why it is showing 123? Okay. I think we should change the color, change the resistance of this to 4.7. Yes. Let us read the code. LDR pin is connected to A0. Float PR, this is LDR. LDR we have connected to the LEDR, we have connected to the pin number 8. LEDR we have connected to the pin number 8. And then word setups, we have started the serial dot begin. Serial dot begin is used to see the values which we are reading on the our serial monitor. Our monitor is there. On the monitor you are able to see the values, so that is perfectly okay. Now LDR pin is input and LEDR pin is output. Okay. PRB is equal to analog read LDR pin. So we are reading the LDR pin from this particular point, say from A0, because we have defined this as a LDR pin as a A0. And then if okay, then what we are saying is that analog read is this much, then delay del. How much we have defined the del? Del we have defined to be equal to 100. Okay, so that means only for 0.1 millisecond, 0.1 second, 0.1 second it will be delay. We are showing that if PRV is less than 600, then what should happen? Then LDR should be equal to high, and then LDR else digital write LDR pin must be equal to row. There is nothing wrong in this particular program. So, but why the simulation is not giving us the correct value? Now it is giving 0. Oh, okay. Sir, there is in a chat box, it's written that one end of the resistance is connected to A0 as well as 5 volts. No. Is Which it fine? This one? Yeah, it says that somebody is, his name is Nazil. He's saying that one end Oh, yeah, of yeah. the resistance is connected to A0
और वही वाला एंड जो है वो 5 वोल्ट्स को भी कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब सेम ही। No, no, not right. Actually, see, let me close this. See, Yeah. this line you are saying that this is connected to the red as well as this. No, this is not connected. Actually, this point I can move it to this point. See, it is crossing only. It is just crossing it. Yes, sir. It is not. This is negative. This is connected to this. See, just see this thing. I am just removing it. I'm sorry. Okay. Now this is connected to this point. Resistance is connected to this particular point, and this resistance is throughout this. And I'm taking this particular point to the A0, isn't it? Now this has to be connected to where? This has to be connected to positive. So I just connected to like this. So makes no difference. I'm just connecting it like this, but this doesn't look beautiful. But let us not see about the beauty now at the moment. So this point I have connected to this red, and this point I have connected to the black, and this is our central point. Oh. Yes, sir. Oh no. Now see, previously what I was doing was I was connecting it to this particular point. So now this goes to this, this goes to this, goes to this, this goes to this. Okay. And let me start simulating, and then click this. How much is the reading coming here? 26. Yeah, now it is values are coming. Okay. Thank the participant. Please thank the participant. I am just taking it to this. So you just see when the value is larger than 650, this is not glowing. And when I take it to this side, this is glowing. See, and in the condition we have put that if PR value is less than 600, which of course at this moment is 26, then this red light should glow. Otherwise, red light should be off, isn't it? Yeah. So, but if the value goes beyond this, beyond 600 and 600, then of course the red light should be off, and that is actually there. If the light is very low, I mean intensity of the light is very low, the bulb should glow. That means the circuit should make a bulb on. And if the light intensity is sufficiently large, then what should happen? Then the bulb should automatically go off. तो ये automation है. हमारे घरों में ये छोटा सा डिवाइस लगाया जा सकता है. जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कम हो जाएगी, बल्ब अपने आप जल जाएगा. जैसे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, वैसे ही बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. और यही इसका फायदा है. देख लीजिए ये सर्किट और ये सर्किट दोनों इंडिपेंडेंट है. एक सर्किट के ऊपर डिपेंड करते हुए, एक सर्किट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हुए दूसरा सर्किट हमारे पास काम करता है. और ये सर्किट हमारे पास हमारे बल्ब का हो सकता है, ये सर्किट हमारे पास मोटर का हो सकता है, ये हमारे पास सर्किट हमारे पास किसी और चीज का हो सकता है. बेसिक जो चीज है वो यही है कि एक सर्किट बना लेते हैं, हम उस सर्किट की वैल्यू रीड कर लेते हैं, और बेस्ड अपॉन दोज वैल्यूज हम जो है ना वो किसी और चीज को ऑपरेट कर सकते हैं. मोटर ऑपरेट करना चाहें, यहाँ पर हम मोटर लगा दें, मोटर चलना शुरू हो जाएगी. हम कोई और चीज करना चाहें वो कर सकते हैं. अगर आप चाहें, इस समय मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो रहा है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर इसकी जगह मोटर लगा सकता हूँ, और मोटर रन करना शुरू हो जाएगी. That will be the beauty of this experiment. इस एक्सपेरिमेंट को बहुत जगहों पर लगाया जा सकता है, जहां पर भी आपकी वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी हो
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये कर सकते हैं। और अगर आप अब फिजिकल वो देखना चाहते हैं तो देन आई स्टॉप शेयरिंग। ये मेरे पास एक सर्किट है। इसमें मेरे पास एक एंड को मैंने A0 के साथ कनेक्ट करना है। ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है उसका एक एंड यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एंड हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, और ये उसके साथ कॉमन है। ये उसके साथ हमारे पास ये उसके साथ कॉमन है। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर जाएगा? वो पॉइंट हमारे पास जाएगा किसको? A0 को। और इस सर्किट का जो हमारे पास एलईडी वाला सर्किट, उस सर्किट का एक एंड हमारे पास किसको लगा देंगे? हमारे अपने पिन को लगा देंगे। So let us do for few minutes, but it will not take more than 2-3 minutes. So let me make the connection. So say I connect this particular point. First of all, I must upload the program, and for uploading the program, I have to Sir, participants are asking for you to explain the programming as well of this circuit. change the programming. What do you mean? नहीं, ये जो प्रोग्राम आपने कोड बनाया है इसको एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं वो। अच्छा, आप बता दीजिए। ठीक है मैम, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया जितने डिवाइसेस लगाते हैं उतनी पिन्स डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमने एक एलडीआर लगाया है, दूसरा हमने एलईडी लगाया है। तो एलडीआर को मैंने क्या दे दिया? इंटीजर एलडीआर पिन इज इक्वल टू A0, और पीआरबी को मैंने फ्लोट बना दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें हम डेसिमल वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट चेंज होती है तो वो डिजिटली नहीं चेंज होती। जब जैसे 600 उसके बाद 601 आएगा या 602 आएगा, 600 के बाद 600.5 भी हो सकता है, 600.6 भी हो सकता है। और ऐसी जो वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं उनको हम फ्लोट टाइप कहते हैं। तो हमारा जो पीआरवी है, इस पीआरवी की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं एलडीआर लिख सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर एलडीआर किया तो बाकी प्रोग्राम में हर जगह पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एलडीआर करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, एक तो एलडीआर पिन है और दूसरा मेरे पास क्या है? एलईडी पिन है। एक तो एलईडी पिन है, नहीं एलडीआर पिन है जो कि मैंने A0 पर लगाया है, और उसकी फ्लोट वैल्यू क्योंकि उसको मैंने रीड करना है इसलिए मैंने फ्लोट पीआरवी दे दिया। पीआरवी एक वेरिएबल है, इसको आप वेरिएबल एक्स भी कह सकते हैं या वैल्यू ऑफ द एलडीआर भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहना चाहें आपके लिए। उसके बाद हमने एलईडी लगाया है जिसको हमने पिन नंबर 8 पर लगाया है, तो इंटीजर उसको हमने, और उसके बाद हमने डिले करना है कुछ। एक ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन लेनी है, तीसरी ऑब्जर्वेशन लेनी है, और ऐसा ना हो कि मैं 0 उसका एलईडी डिले ना करूं तो एकदम से भागता चला जाएगा। जो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर दिखाती है वो हमारे पास भागती चली जाएगी। तो ओके, देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट। वर्ड सेटअप में क्योंकि हमने दो पिनें यूज की हुई है, तो हमने पिन मोड एलईडी को जो क्या किया है बोला, हमने आउटपुट कर दिया है, और पिन मोड एलडीआर पिन को हमने इनपुट कह दिया है। और ये जो चीज है जो हमारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो हमारे पास सीरियल डॉट बिगिन है। आपका जो मॉनिटर है, जो आपका जो लैपटॉप है, उस पर एक जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अगर कोई चीज दिखानी है तो आप क्या करते हैं? सीरियल डॉट बिगिन लगा देते हैं, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया आपने 9600। 9600 क्या है? ये नंबर ऑफ द बिट्स पर सेकेंड जो हमारे पास ट्रांसफर होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती हैं। जिस स्पीड से हमारा डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम बॉड कहते हैं, BAUD बॉड कहते हैं। और वो बॉड जो है हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ द बिट्स पर सेकेंड है। बिट्स में और बाइट में फर्क समझिए आप। एक बाइट में हमारे पास 8 बिट हो सकते हैं, 16 बिट हो सकते हैं, 32 बिट हो सकते हैं, एटसेट्रा। नॉर्मली जो है ना, जो स्टैंडर्डाइज जब पहले बार बताया जाता था तो one byte was 8 bit. Nowadays it is not 8. One byte is not 8 bit. One byte may be 16 bit byte, maybe 32 bit byte, maybe 64 bit byte. As the advancement is going on, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ दी बिट्स जो होते हैं एक बाइट के अंदर वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
इस समय ये है 9600 बिट्स जो है वो हो रहे हैं। अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो उतने बाइट्स हमारे पास पर सेकंड हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। और पिन मोड एलईडी का मैंने आउटपुट कर दिया, क्यों? एलईडी हमारे पास लाइट देता है। और पिन मोड हमने एलडीआर का क्या कर दिया, इनपुट है, क्योंकि वहां से हम रीड कर रहे हैं, कोई चीज रीड कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लूप में हम क्या कर रहे हैं। लूप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए पीवीआर। पीवीआर एक वेरिएबल है जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, किसको बोला, एनालॉग रीड। एनालॉग रीड, रीड का आर जो है वो कैपिटल है ब्रैकेट में, किसको रीड कर रहे हैं हम, अपने एलडीआर पिन को रीड कर रहे हैं। और जो भी रीड वो कर रहा है वो कहां पर आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है पीआरवी में जाकर वैल्यू आ रही है। समझ रहे हैं आप? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनालॉग रीड कर रहे हैं किसको, एलडीआर पिन को हम रीड कर रहे हैं, और जो भी वैल्यू वो वहां पर रीड कर रहा है उसको वो किस में डाल रहा है, पीआरवी में डाल रहा है। उसके बाद हम डिले कर रहे हैं 1 सेकंड की, क्योंकि हमने डेल इज इक्वल टू 0.1 सेकंड की, डेल इज इक्वल टू 100 का रखा है, तो इसका मतलब 0.1 सेकंड की डिले। अब हम उसको क्या कह रहे हैं, अब हम उसको कह रहे हैं कि सीरियल डॉट प्रिंट में उसने क्या कहा, सीरियल डॉट प्रिंट जब हमने बॉड रेट डिफाइन कर दिया तो वहां पर हम सीरियल डॉट प्रिंट एक कमांड है जो कि स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगर कोई वैल्यू कोटेशन मार्क के अंदर है, ये हमारे पास कोटेशन मार्क के अंदर है, तो वो वैल्यू एज सच दिखाई देगी, बिल्कुल जो भी लिखा हुआ है इसमें वो दिखाई देगी। और उसके बाद हमने कह दिया है सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ये था सिर्फ प्रिंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन करते ही हमारे पास जो लाइन चेंज हो जाती है, उस दो से उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद उसके बाद लाइन नेक्स्ट हो जाती है। पर क्या प्रिंट डॉट एलन, प्रिंट डॉट एलन पीआरवी, पीआरवी क्या था, ये पीआरवी है जो कि उसने रीड कर रखा है, जो वो वैल्यू रीड कर रखी है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 678.00 दिखाई दे रहा है, वो प्रिंट करा रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं इफ PRV इज लेस देन 600। अब ये 600 हमने कैसे डिफाइन किया, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं 600 ही डिफाइन करूं। आपका जो एलडीआर है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसको बुझा सकता है, दूसरी वैल्यू पर उसको ऑन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर आपको लाइट को जलाना चाहते हैं, किस वैल्यू पर उस लाइट को ऑफ रखना चाहते हैं। तो मैंने रेंडमली ये 600 कर दिया। मैं अगर 600 की बजाय अगर 500 कर देता तो भी मेरा प्रोग्राम उसी तरह चलता, पर 500 पर चलता। 500 से ज्यादा वैल्यू होते ही हमारा जो ये ऑफ हो जाता, और 500 से कम होते। मैं ये कह रहा हूँ कंडीशन इफ पीआरवी इज लेस देन 100, जैसे ही ऐसी कंडीशन होती है, इफ देन हो गया या डू वाइल होता है ऐसा, उसके लिए फिर एक ब्लॉक बनता है। ये ब्लॉक कैसे बनता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में जो कुछ लिखेंगे वो हमारे पास ब्लॉक होगा। तो इफ पीआरवी इज लेस देन दिस, देन डिजिटल राइट, किसको बोला, एलईडी को हाई कर दिया आपने। यहाँ पर हाई की जगह 1 लिख देंगे तो भी प्रोग्राम उसी तरह रन करेगा। एल्स नहीं तो क्या होगा, इफ अगर दिस है तो एक ब्लॉक बन गया, अगर ये नहीं है तो एल्स कंडीशन आती है जो हमारे पास दूसरे ब्लॉक के अंदर लिखी जाएगी। ये ब्लॉक फिर उसका ये ब्लॉक आ गया। एल्स क्या किया जाएगा, डिजिटल राइट एलईडी आर कॉमा लो, तो या तो वो ऑन कर देगा या फिर उसको वो ऑफ कर देगा, और ये प्रोग्राम आपका हो गया खत्म। करेक्ट है। इस पीआरवी की जगह अगर आप सेंसर वैल्यू लिखना चाहते हैं, सेंसर वैल्यू, पर अगर आप यहाँ सेंसर वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर भी आपको सेंसर वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। सो दिस प्रोग्राम इज सो सिंपल। Is this program understandable to the participant? Kindly ask, please. I think it is very easy answer explain to everyone. And now, Tejwani sir, I am also requesting you because time is going to over. Yes, because whatever I have explained, that is there only in the physical program also. It is exactly similar. I am requesting you to end the program. And I request P.K. Adwalia sir to give a few words about this program. Yeah, it's wonderful. Thank you, Sejwani sir. It was good that I didn't come early because I would have then left. But I could not leave because I wanted to thank you and thank the organizers that they are doing great job, and keeping the flag of IAPT high.
That is one thing which I would like to say. So there was a thought which was coming in my mind, Sajwani sir. I'm just sharing it with you. There is a very interesting book whose title is Art of Electronics, if I am remembering it correctly. Art of Electronics. Yes, and you know, they have, from physics point of view, they have built up you know, experiments from simple to some projects, and that's, you know, one of the best books for physics students. Very good. And maybe I will let you know the maybe you must be knowing about it, let you know the full details of that. I think Cambridge University Press has published it, and there is a manual also available in the market for that. Okay. I wish if we could really translate those experiments with the help of this Arduino board, particularly for electronics labs. And I think that will really, what you call, remove the mystery around the electronics experiments, because most of the times, you know, students and teachers think that they are black box experiments. I was just watching that how you were trying to explain that here is a potentiometer, and then you were trying to tell that what are those two terminals which are connected to positive, which is connected to negative, and then you are trying from drawing from top the voltage which you want to really have in the circuit. So that kind of an approach is indeed very, very good. And if that book can be converted, or some programs can be, you know, made on the basis of that book, particularly targeted to physics students at undergraduate level and at MSc level, I think that will be wonderful. This is one request which I wanted to make. I will definitely like to. Then, sir, I was thinking about a name for what you call this program itself. सेजवानी सर, आपने मावा जरूर सुना होगा. मावा हम इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह पे. हाँ जी, हाँ जी. जी, जिसको खोआ बोलते हैं. हाँ जी, हाँ जी. और मुझे याद आ रहा था एक कि ये बहुत सारी जो हमारी डेजर्ट्स बनती हैं, स्वीट्स बनती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है मावा. MAWA मैं उसको कह रहा हूँ, हिंदी में मावा. हाँ जी. And actually, if I use it as an acronym, I would like to call it as mess around with Arduino. Okay. The way you are using the term tinkering, I am changing that to mess around with Arduino, Mava. And this is a Mava from RC Delhi and Haryana, IAPP. And maybe some kind of a e-magazine can be brought out for Arduino itself, because I think it's a big subject. If we can really bring out, just like, you know, the way we used to have electronics for you, sir. Yes, sir. उसमें हम लोग अपने डायग्राम्स दे दें, कोई राइटअप्स लिख दें, और Arduino के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, मे बी मंथली और मे बी क्वार्टरली. वैसे तो मंथली होना चाहिए मुझे लगता है. और IAPT RC जो है हरियाणा और दिल्ली, ये इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज ए न्यू इनिशिएटिव आल्सो. तो ये जो Arduino का आपने बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है दिल्ली RC03 ने, RC01 ने, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा. और मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम्स को वॉच किया था, और अब भी मैं कर रहा हूँ, और आने वाला जो आप एक लंबा प्रोग्राम करने वाले हैं, उसकी भी मुझे इंतज़ार है कि वो आए और उसमें नेशनल लेवल से काफ़ी लोग और जुड़ें. ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी. So as usual, Sejwani sir, you did a great
presentation, crystal clear, and I must congratulate RC01 President Seema Watts and her team, who are doing a wonderful job in innovating on some new things and making use of online platform also. And you are going to be soon on offline platform. Yes, I sir. think lots of people around RC01 must have been waiting for that. Today I was watching in the audience, there was one, I think, group from SCERT of Haryana also. And I think it is very good that via SCRTs also this kind of a culture can be spread forward. So if RC01 can go ahead with some kind of an MOU with SCRTs for such programs, I think that will be a big service to the people, because they keep on organizing such programs. And we are having Atal Tinkering Labs in our schools, and Arduino, I think, is a part of the Atal Tinkering Lab also. So it can really influence very many things and the working of the Atal Tinkering Labs as well. So I think it's just wonderful, sir. And I hope participants have liked it. Keep engaging yourself, dear participants, because that is the only way to learn the things. IAPT is with you. You can suggest programs to IAPT regional councils also. And I think IAPT can do wonders for you. I'm sure about that. The dedicated teams which are emerging in the country is a very good sign I can see now. So once again, congratulations and thank you very much, particularly Sejwani sir. You have a passion, sir. I can see that. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. And I would like to inform you that soon in month of July, we'll be organizing an offline workshop of 25 teachers in Mount Caramel School and then Amity School as well. So that will be covering. And then we will have all these grassroots level problems that we'll be facing. We'll cover up that in the future workshops. So thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you, Ji. Thank you, Seema ma'am. Ma'am, if you allow, we will end the recording. Single sir, वो कल का बता दीजिए आप. Tomorrow program will continue from 10 a.m. onward. This program, this is the part 1 today we have done, and part 2 of this program will continue from 10 a.m. onward tomorrow. Kindly, all are requested to join timely. And tomorrow there will be a question answer session as well, and there will be interactive session. And soon in chat box we'll be posting an assignment. Please go through those assignments and try to finish it up after 2 days. Once you have this workshop, we will upload it on YouTube. And then you have to finish up your assignment. It's very simple. It's not a very major one, but Single sir, can you put up the assignment in a chat box so that participants? I think it will be posted tomorrow after this. Okay, fine. Fine, it's fine. Over to you. Thank you, everyone. We are ending the program now. Thank you, sir. Thank you, Single sir. So we are ending the recording now. Yes.